start with our next topic, that is inequality and discrimination. In previous chapter we have discussed. Now tell me, what is inequality? Inequality comes about when a person does not have resources and opportunity that are available to other person. Resource inequality क्या होती है? when a person does not have the resources, proper resources नहीं होते या opportunity नहीं होती है जो कि दूसरे person के पास होती है, that is called inequality. And discrimination means भेदभाव करना. Okay, discriminations happens when people act on their prejudice or stereotype. Now in previous lecture we have discussed about prejudice and stereotypes. Now what is the meaning of prejudice? Prejudice means when we think negative about other person, and stereotype means when we make a predefined image, जब हम किसी की predefined यानी कि पहले से ही एक image बना लेते हैं. Now discrimination happens when people act on their prejudice or stereotype. भेदभाव कब होता है? या तो हम किसी के लिए एक नेगेटिव फीलिंग बना लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, एक किसी के लिए प्रीडिफाइंड पहले से ही एक इमेज सेट कर लेते हैं, तब भेदभाव होते हैं. If you do something to put other people down, if you stop them from taking a part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, means जब आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे if you stop them, जैसे किसी भी एक्टिविटी में उसे पार्ट लेने से रोकते हैं, या फिर आप उसे जॉब नहीं करने देते, या फिर अपने आसपास नहीं रहने देते, ठीक है, या फिर आप उन्हें पानी निकालने नहीं देते उस हैंडपम्प से या टैप से जहाँ से आप पानी ले रहे हैं, और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप, या फिर आप उन्हें क्या नहीं करने देते, यू विल नॉट गिव अ कप, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, टी पी रहे हैं, या गिलास, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम. और इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं. जब आप उनको अपने आसपास नहीं आने देते, यू विल नॉट गिव अ वाटर टू ड्रिंक इट, ओके, यू आर नॉट गिविंग द जॉब, और they are मतलब means you are not allowing that they will not live with you, or a certain things, ठीक है, certain activities you will not give a permission to participate in, ठीक है. तो ये सारी ही चीज़ें क्या करती हैं, it will create a discrimination. Discrimination can take place because of several reasons. Discrimination, it can be maybe of many reasons, like you probably recall from the previous chapter that Sameer 1 and Sameer 2 were different from each other in many ways. Have you seen the earlier lecture? In earlier lecture means in the first chapter we have discussed about the story of Sameer 1 and Sameer 2, who are very different from each other. Okay, their names are same. The one thing is similar is what? Their name. That is Sameer, but otherwise all things are different from each other. Like we can talk about the region, okay, their family background, or their schooling, their job, each and everything is different from each other. For example, they belong to different religion that I told you. Suppose they both are different religions. This is an aspect of diversity. As we can say, this is a diversity. Means if we talk about their religion, means one Sameer 1 is Hindu and Sameer 2 is Muslim. So that comes in diversity. However, this diversity can also be a source of discrimination. लेकिन यही diversity किस में भी change हो सकती है, भेदभाव में भी change हो सकती है, discrimination में भी. Groups of people who may speak a certain languages, follow a certain religion, live in specific region, etc. may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. Means what they were saying कि आपकी
आपके बोलने का तरीका, और इफ़ वी टॉक अबाउट द रिलीजन, और इफ़ वी टॉक अबाउट द रीजन, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, कस्टम, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दैट कम्स अंडर प्रीजुडिक्स और स्टीरियोटाइप। मीन्स यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं, भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। कैसे? लाइक फॉरेन प्रीजुडिक्स, या तो आप नेगेटिव फीलिंग ले लेते हैं, या फिर आप स्टीरियोटाइप, दैट मीन्स आप एक पर्टिकुलर इमेज बना लेते हैं, एंड बिकॉज ऑफ बोथ द थिंग्स इट विल कम अंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये दोनों ही चीज़ें किसके अंडर में आने लगती हैं? भेदभाव, यानी कि आप डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। Another difference between the two Samirs was in their economic backgrounds. Now, if we talk about their economic background, Samir though was poor, this difference, as you have read earlier, is not a form of diversity but of inequality. People who are poor do not have the resources or the money to meet their basic needs of food, clothing and shelter. Now what they were talking about, if we talk about the economic background, जैसे कि आपको as you know that Samir though was poor, ठीक है, he is doing a job, what he is doing, he is selling a newspaper, ठीक है, और in comparison to Samir though, Samir एक is in rich family, ओके, वो रिच फैमिली से था, एंड ही इज़ स्टडिंग इन द स्कूल, वो स्कूल में पढ़ रहा था। This difference, as you had read in the earlier, it is not a form of diversity but of inequality. ये हम diversity को ना कहकर हम inequality का भी नाम दे सकते हैं। Why? Because Samir though has not a proper resources and opportunity to go to school. मतलब समीर दो के पास ये अपॉर्चुनिटी या रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि वो स्कूल जा सके या वो पढ़ सके, ठीक है, तो हम इसे इनइक्वालिटी का नाम भी दे सकते हैं। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स, यानी कि पर्सन, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो क्या होते हैं, जो इनइक्वालिटी के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव द मनी, ठीक है, कि वो क्या कर सके, अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर सके, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, ठीक, जैसे कि लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सारी ही चीज़ें। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, इन हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्सेट्रा, और ये सारी ही चीज़ें वो कहाँ एक्सपीरियंस करते हैं? इन अ हॉस्पिटल, ऑफिस, स्कूल्स एक्सेट्रा, वेयर दे आर ट्रीटेड बेडली बिकॉज दे आर पुअर होने की वजह से, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एवरीवन imposing him और imposing them, उनको इम्पोज किया जाता है, ठीक है, या इंसल्ट किया जाता है, या फिर उन्हें वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, जैसे कि लाइक ऑफिस में या हॉस्पिटल्स में या स्कूल्स में, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर बेड कंडीशन होने की वजह से। सम पीपल may experience both kind of discrimination, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस लेते हैं। कैसे? डिस्क्रिमिनेशन में। दे आर पुअर एंड दे बिलोंग्स टू ग्रुप हु कल्चर इज नॉट वैल्यूड। क्या बोल रहे हैं? मीन्स सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दोनों तरह के डिस्क्रिमिनेशन वो देख रहे हैं। पहला कि दे आर पुअर, एंड सेकेंड वन दे बिलोंग्स टू ग्रुप whose culture is not valued। ऐसे ग्रुप से वो हैं जहाँ पर उनके कल्चर को वैल्यू नहीं दी जाती, इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। Tribals, some religious groups or even particular region are discriminated against for one or more of those reasons. What they were saying, if we talk about the tribal religion, okay, some religious group or even particular region are discriminated for one or more of these reasons, means because of the tribal, means they are a tribal, that's why they are discriminated, इसीलिए उनमें क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है, because they are tribals। In the following section, we will look at how a famous Indian discriminated against
This will help us understand the way in which caste was used to discriminate against large number of people. Means after this I will tell you some sort of story, okay? In that you will get to know means how the famous Indian were discriminated. Discriminate कैसे हो रहे हैं, उनमें भेदभाव कैसे किया जा रहा है. This will help you to understand the ways in which caste was used to discriminate. इससे इस जो मैं आपको बताऊंगी द टॉपिक आई टेल यू लेटर, इसके बाद जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगी उसमें दिस विल हेल्प यू कि आपको पता लगे कि दैट कास्ट वाज आल्सो अ रीज़न टू डिस्क्रिमिनेट. कास्ट भी एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से क्या होते हैं, भेदभाव होते हैं बहुत सारे लोगों के साथ. अ कॉमन स्टीरियोटाइप about Muslim is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. Means Muslim peoples have made up a predefined image that they are not interested to give a education to the girls and they are not sending their girls to school. However, studies have now shown that poverty amongst Muslim is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few days. If we talk about, we have seen the poverty in the Muslims and that is the reason they are not sending the children or girls to school, or after a few years they have dropped out their school or study, we can say. Wherever efforts have been made to reach education to the poor, there our Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. Means where the efforts have been given to send the children to the school, Muslim community is the most important who have shown the interest to send their child or a girl to school. Means मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी थी who has shown the interest, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया that they will send their girls to school. Otherwise, because of the poverty, they are not sending their girls to school or drop out the school. Another example they have given, see, for example, in the state of Kerala, the distance between the school and the home is not much. If we talk about the state of Kerala, ठीक है, the difference means the distance of school and home is not much. School और घर का जो distance है वो ज़्यादा नहीं है. There is a good government bus services that helps teacher reach school in rural areas, and government has given a bus facility to the teachers to reach the school, and over 60% of the teachers are women and 60% जो teachers हैं they are female. These factors have helped children from poorer family including Muslim girls attend school in much numbers or in much large numbers. What they were saying, ये facility means the bus facility they have given to the teachers and over 60% of the teachers are women. ये होने की वजह से most of the children are coming to school and mostly the Muslim girls are sending means Muslim peoples are sending their children to school to study. In other states where such efforts have not been made, children from poorer family whether Muslim, tribal or so-called lower caste find it difficult to attend school. If we talk about in other states, means government are doing a effort, वो effort दिखा रही हैं, but दिखा रही हैं ये गवर्नमेंट एफर्ट दिखा रही है कि बच्चे जो गरीब बच्चे हैं they will also come to school. But whether if we talk about the Muslim, if we talk about the tribal, if we talk about the so lower caste,
लोअर कास्ट की अगर हम बात करें तो दे आर फाइंडिंग डिफ़िकल्ट, उन्हें उस चीज़ में भी डिफ़िकल्टी लग रही है, एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट सेंडिंग देयर चाइल्ड टू school. Therefore, poverty, not religion, is the cause of non-attendance of Muslim girls in school. That is why poverty is the main reason we can say, not the religion is the cause of not attending the school.